Yes, hello Shweta, welcome on YourPedia platform, and let's start your thermodynamics snap for your BPSC interview for the post of lecturer through Bihar Public Service Commission. So Shweta, thermodynamics what you studied? So first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, properties of thermodynamics, and small quantity. Properties क्या होती हैं? What do you understand by properties? Sir, characteristic is known as properties such as pressure, temperature, volume, etc. Characteristic of a system. There are so many characteristics like the color of a system. Yes. Color is not a characteristic. Sir, color is Why? So it is not characteristic of thermodynamics. It's not a measurable characteristic, but it is a characteristic. Yes, sir, it is not measurable characteristic. So you need to use that word, measurable characteristic. Measurable characteristic. Yes, fine. So what is the difference between intensive and extensive properties? Properties which are independent of mass are known as intensive properties, and properties which depends on mass are known as extensive properties. Example of intensive properties are pressure, temperature. Example of extensive properties are volume, energy, such as kinetic energy, potential energy, enthalpy. An example of intensive properties are specific internal energy, specific enthalpy. So how you can say that pressure is an intensive property? सर अगर हम एक सिस्टम ले रहे हैं उसके पॉइंट पे हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो P ही आएगा, वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम कितना मास का लेके मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए वो there is some gas inside a LPG cylinder. Yes sir. तो जैसे जैसे मास बढ़ाओगे तब प्रेशर विल इंक्रीज इनसाइड द LPG सिलेंडर, नहीं? अगर कम गैस है LPG सिलेंडर में तो प्रेशर कम होगा. Yes sir. ज्यादा मास फिल करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा. तो प्रेशर इज गोइंग टू चेंज विद मास, नहीं? सर उस एलपीजी सिलेंडर के दो पोर्शन में देखेंगे तो दोनों पोर्शन में जिस टाइम पे मास को तो उसमें उतना ही आएगा, दोनों साइड का प्रेशर पीपी ही आएगा, जो भी उसका स्पेसिफिक वैल्यू आएगा उसका नहीं होगा. So are you sure pressure is an intensive property? Yes sir. ठीक है. तो आप बताओ ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? Yes sir. First law of thermodynamics is law of conservation of energy, that is can neither be created nor be destroyed, it can only transform from one form to another. It is given by Joule. According to Joule's law, for a closed system undergoing a cycle, net interaction is always equal to net work interaction, that is cyclic integral of delta Q equal to cyclic integral of delta W. And for a process, it is defined as delta Q equal to DU plus DE plus del W, where delta Q is heat interaction between system and surrounding, delta W is work, and DE is internal energy. DE is energy. And if we neglect kinetic energy and potential energy, then DE terms will becomes only internal energy, that is DU. Shweta, specific heat क्या होता है? What is specific heat? Sir, amount of heat required to raise the temperature of unit mass by unity is specific heat. अच्छा, you know CP जो होता है specific heat at constant pressure, that is more as compared to CB. Yes sir. What's the reason behind that? Sir, when we calculate specific heat at constant pressure, then some amount of heat is required to raise the temperature and some amount of heat is used to produce work. And when we calculate specific heat at constant volume, then only heat is required to raise the temperature. There is no work because
constant volume work is 0. Under PDV diagram, when you calculate work, then constant volume work is 0. That is why Cp is greater than Cp. Can you tell me the difference between PMM1 and PMM2? Yes, sir. PMM1 is perpetual motion machine of first kind. It violates the first law of thermodynamics. That is, it produces work continuously without consuming any other form of energy, any equivalent form of energy. And PMM2 is perpetual motion machine of second kind. It violates second law of thermodynamics. That is, it produces work by exchanging heat with single reservoir. What is degree of freedom? How we define degree of freedom? No, so number of independent coordinate required to fix the state is degree of freedom. कैसे निकालते हैं आप? Suppose you are having a system, how you can find out the degree of freedom? Sir, it is calculated by Gibbs phase rule, given as P plus F equal to C plus 2, where P is number of phase, F is degree of freedom, C is number of component. P plus F equal to C plus 2. So how much is the degree of freedom at critical point? Critical point पता है आपको क्या होता है? Yes, sir. हाँ, तो बताओ पहले critical point क्या होता है और degree of freedom कितनी होती है critical point पे? Sir, at critical point, all the three phase solid, liquid, and vapor coexist together. नहीं, वो तो triple point होता है. Sir, sorry. At critical point, sorry, sir. At critical point, liquid directly flashes into vapor. ठीक है. तो कितना होता है degree of freedom at critical point? Sir, can I take 2 seconds? हाँ. Sir, degree of freedom 1. Degree of freedom 1 होता है? Yes, sir. But critical point तो एक fixed point है. नहीं? Yes. If you draw PQ diagram, PT diagram, you will get fixed point. Degree of freedom तो 0 होता है. So maybe I am. चलो. आप मेरे को बताओ कि what is Closure statement? Can you tell me something about closure statement? Sir, clauses inequality. Clauses. Closure statement की बात करो, मैं inequality की बात नहीं कर रहा हूँ. Okay, sir. Closure statement linked with the second law of thermodynamics, associated Okay, with second law of thermodynamics. Okay, sir. Sir, it is impossible to transfer heat from low temperature reservoir to high temperature without external work input. Clauses statement. So how you can transfer heat from low to high? Sir, for this we have to provide some work. We have to input some work. Sir, एक रिजर्वायर लो टेम्परेचर पे T1 पे, उसे मुझे ट्रांसफर करना है T2 टेम्परेचर पे. तो उसके लिए मैं उसकी हेल्प लूंगी हीट पंप या रेफ्रिजरेटर का. अगर कंडीशन स्पेस के अकॉर्डिंग कि मेरा कंडीशन स्पेस क्या है उस अकॉर्डिंग मैं लूंगी. अगर मैं रेफ्रिजरेटर के हेल्प ले रही हूँ मतलब मुझे लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो उसके लिए मुझे रेफ्रिजरेटर पे वर्क करना पड़ेगा. वो लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, उस पर वर्क इनपुट होगा और वो उसे हाई टेम्परेचर पे डिलीवर करेगा. इस वे में सर ट्रांसफर होगा हीट. श्वेता, हीट पंप में और रेफ्रिजरेटर में क्या डिफरेंस है? सर, हीट पंप मेंटेन करता है बॉडी को टेम्परेचर हायर देन दैट ऑफ सराउंडिंग. रेफ्रिजरेटर मेंटेन करता है बॉडी को एट अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ सराउंडिंग. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप होता है 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप की लिमिट होती है 1 to infinity और रेफ्रिजरेटर की लिमिट हो जाएगी 0 to infinity.
Hello, sir. Sir, I am audible. Hello. Hello. I think network issue. Now One fine. second. Shweta, what is throttling? You define throttling process. Yes, sir. Sir, flow through a restricted passage or flow through restricted passage or constructed tube or narrow passage is known as throttling. Throttling is irreversible process. In it, enthalpy is constant. That is, it is isenthalpic process. So what about, when we are carrying out throttling of real gases, the temperature is going to increase, decrease, or it is going to remain constant? So temperature is going to decrease. Always, even if you are carrying out throttling of real gases. Yes, sir. Temperature is going to decrease. What about if Joule-Thomson coefficient is negative? Sorry, sir. I'm unable to You heard recall. about Joule-Thomson coefficient? Yes, sir. What is that? So mu equal to del T by del P at constant at H. बिल्कुल सही. तो अगर ये नेगेटिव है, Joule-Thomson coefficient is negative, so then the temperature will increase. Yes, sir. So the heating can also take place in throttling. नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ठीक है श्वेता, अभी मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ. ठीक है, आपका डिलीवरी स्टाइल अच्छा है श्वेता, और आपका नॉलेज भी ठीक है. आई आस्क्ड यू सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट बिकॉज़ दे आर गोइंग टू आस्क यू वेरी सिंपल डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन ओनली. थोड़ा आपने मास्टर्स किया या यू आर हैविंग बीटेक ओनली एज ए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन? सर करेंटली मैं मास्टर्स में इनरोल्ड हूँ. मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, मतलब 4th सेमेस्टर. बट मैंने मास्टर्स बहुत सीरियसली नहीं पढ़ाई किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने मास्टर्स नहीं बताऊं. तो आप एक गैप कैसे जस्टिफाई करोगे देन? सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ. तो आपने कब अपना बीटेक कब कंप्लीट किया है? सर मैंने 17 में कंप्लीट किया है. 17 में कंप्लीट किया है. और एमटेक कब ज्वाइन किया आपने? 2021 में? 20 यस में? सर, 21 में. इसमें ये ज्वाइन. ठीक है. कहाँ से आप एमटेक कर रहे हो श्वेता? NIT दुर्गापुर. एनआईटी दुर्गापुर. एंड इन विच ब्रांच? सर थर्मल इंजीनियरिंग. थर्मल इंजीनियरिंग. ठीक है. चलो खैर, उसके लिए अलग से जब आप फुल मॉक दोगे ना, देन वी विल डिस्कस. इट इज गुड टू मेंशन अबाउट दैट बिकॉज हाई क्वालिफिकेशन अगर अच्छा है, बढ़ना चाहिए. यू आर डूइंग एमटेक फ्रॉम ए वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट. एनआईटी दुर्गापुर से आप कर रहे हो, यू आर डूइंग इन ए गुड डोमेन थर्मल इंजीनियरिंग, तो आपको मेंशन कर देना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. तो थोड़ा सा एक बार आप डिस्कशन कर लेना, मॉक वगैरह जब लगाओगे ना. इट इज गुड टू यस मेंशन अबाउट योर वर्क. मास्टर्स पर देखते हैं, एक बार मेंशन कर देना फर्स्ट मॉक में, तो यू विल गेट आइडिया कि क्या वो पूछ सकते हैं कितना आपने कुछ रिसर्च किया है. सम रिसर्च वर्क यू स्टार्टेड इन योर फाइनल 4th सेमेस्टर? यस सर. हाँ, तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछेंगे. तो और मेरे सर को नहीं लग रहा है कि क्या ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि आप क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. दे आर गोइंग टू आस्क यू बेसिक क्वेश्चन ओनली. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द एडवांस क्वेश्चन. बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर एमटेक आप मेंशन करते हो तो दे कैन आस्क यू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू योर रिसर्च वर्क. ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट द एडवांस सब्जेक्ट्स. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम एडवांस हीट ट्रांसफर या थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. बट ओके. वो मेंशन करना अच्छा रहेगा. एक तो आपका गैप जस्टिफाई हो जाएगा, एंड इवन यू विल गेट सम मोर एडवांटेज बिकॉज यू आर हाईली क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब. मास्टर्स तो होना चाहिए लेक्चरर पोजीशन के लिए. ठीक है. तो मेंशन करना चाहिए आपको श्वेता, इन जनरल तो मैं यही कहूंगा. अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट. ठीक, आपने हैंडल किया. थोड़ा थोड़ा मैंने आपको कंफ्यूज किया था उसमें. प्रेशर में, प्रेशर क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड मास है आपके पास, अभी उसका जो प्रेशर रहेगा वो इनवेरिएबल रहेगा. लाइक सपोज यू आर हैविंग एलपीजी सिलेंडर, तो व्हाट प्रेशर इफ यू आर मेजरिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द साइज. ओके. बट एक्चुअल में इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करोगे जब वो ऐसा ही चीज बोल देता है कि सपोज यू आर हैविंग ड्रॉप वाटर वाटर इन ए बकेट. अब वहां पे आप एक 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 ड्रॉप वाटर का ले लो, एंड इफ यू इवन इफ यू आर टेकिंग द एंटायर बकेट ऑफ वाटर, मास डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो, डेंसिटी तो चेंज नहीं कर रहा है. नहीं यस. कर रहा है. नहीं सर, डेंसिटी में चेंज नहीं होगा. टेम्परेचर भी नहीं करेगा, नहीं. विस्कोसिटी भी नहीं करेगा, यस. प्रेशर तो कर जाएगा. एज द हाइट इज गोइंग टू इंक्रीज,
अगर मैं बात करूँ प्रेशर एट ए पर्टिकुलर बॉटम ऑफ द कंटेनर, इट विल इंक्रीज विद मास। यस तो सर। उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, उसका सोचो आप। वो आपने सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं किया था, ठीक है। तो सर देन उसका आंसर क्या होगा? यू आर आस्किंग मी अबाउट दैट प्रेशर। यस सर, देखो यस। उसमें थोड़ा सा आपको ये एक तो इस तरह से जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो प्रेशर है व्हेन यू आर टेकिंग ए सिस्टम, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज ड्यू टू व्हाट? when the gas particle they are having random molecular motion, so when they are striking with any particular surface, their momentum is going to change, and due to their momentum change they are going to exert some force according to Newton's third law of motion, and that normal force exerted by the fluid over the surface per unit area, that is pressure. Okay, अब वो क्या है? अगर आप उसके एक्सप्रेशन की बात करोगे, that is not going to depend on the mass, वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। यस सर। प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर इज व्हाट द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया। ओके, तो वहां से आप थोड़ा सा इसको लिंक कर सकते हो। बट हाँ, अगर उसको सेम एक्सप्रेशन उस तरह से आप लिंक करोगे कि अगर आप मास चेंज कर रहे हो, फीलिंग कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, देन यू विल गेट डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग दैट। दूसरा आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? साइज। जब हम बात करते हैं मास और साइज की, तो आप किसी चेंबर है, सपोज यू आर सिटिंग इन ए रूम, you if you are dividing that room into multiple parts, the pressure will be same everywhere, whether you are taking a small corner of the room and you are taking the entire room, pressure will be same atmospheric pressure. So pressure is not depending on the size or mass of the system. तो मास वाले के लिए तो वहां से इक्वेशन बताना, साइज के लिए आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हो। गेटिंग सम आइडिया श्वेता? यस। बट वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि वो सेम चीज तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी जो मैंने आपसे पूछा था पानी के लिए। MGH। पानी के लिए है, पानी के लिए तो आप चेंज करते रहते हो, तो दैट इज विजिबल ना कि विस्कोसिटी तो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कंडक्टिविटी सेम रहेगी जो भी है, ठीक है, डेंसिटी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बट प्रेशर एट ए पर्टिकुलर सरफेस इज लुकिंग लाइक इट इज गोइंग टू चेंज बिकॉज प्रेशर इज रो जीएच, ठीक है। थोड़ा सा उससे सोचना। पीएमएम 1 पीएमएम 2 क्रिटिकल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने बताया नहीं कैसे निकालोगे, उसको निकालना एक बार। क्रिटिकल पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट पे थोड़ा देखो उसको कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। यस सर। थ्रोटलिंग में टेम्परेचर कैन इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर जूल थॉमसन कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर घटता है, कूलिंग होता है। अगर जूल थॉमसन कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीटिंग हो जाती है। देयर आर सम गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम व्हिच आर हैविंग नेगेटिव जूल थॉमसन कोफिशिएंट, तो वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है रियल गैस। आइडियल गैस का अगर थ्रोटलिंग करोगे, आइडियल मतलब थ्रोटिकली यू आर एज्यूमिंग कि यू आर कैरिंग आउट थ्रोटलिंग ऑफ आइडियल गैस, तो आइडियल गैस का तो एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो फिर तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। रियल गैस के लिए थ्रोटलिंग में टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। फाइन, वो ठीक बताया वैसे आपने जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता क्या है, तो मेरे को ठीक लगा है श्वेता। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू आंसर, थोड़ा सा इसको और रिफाइन कर लो, कॉन्फिडेंट होके आप आंसर करते हो तो देयर आर वेरी गुड थिंग्स इन फेवर ऑफ यू, ठीक है। तो ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहो, आई फील यू विल बी एबल टू गेट थ्रू दिस। ठीक है श्वेता, ओके, गुड लक, बेस्ट लक फॉर योर फाइनल इंटरव्यू। थैंक यू सर। एक बार देख लेना, कोई डाउट आएगा तो यू कैन रीच टू मी। ओके सर।